नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। रोटरी मेंस बिजनेस फेलोशिप का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव बैंगलोर स्थित एक होटल में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को बिज नेक्स्ट नाम दिया गया है। साथ ही पिछले वर्ष राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। इस वर्ष बैंगलोर में आयोजित हो रहे कॉन्क्लेव में करीबन 31 चैप्टर्स के मेंबर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मुंबई, पुणे, जयपुर, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सहित कई देश के और कई राज्यों के रोटेनियर्स शामिल हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रोटरी मेंस बिजनेस फेलोशिप के इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में अमेरिका, मैक्सिको सहित कई 5 देशों के स्पीकर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अलग अलग स्पीकर्स को बुलाया गया है जो बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं और अनुभव भी शेयर कर रहे हैं। बिजनेसमैन को मानसिक रूप से भी एक्टिव और हेल्दी रहना होता है। उन्हें अपने बिजनेस और फैमिली दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। कॉन्क्लेव में इस टॉपिक पर हुए सेशन में स्पीकर्स ने अपने विचार रखे हैं। रोटरी मेंस बिजनेस फेलोशिप के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में नेटवर्किंग को लेकर भी सेशन आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग देशों के बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए डिस्कशन किया है। कॉन्क्लेव के चेयरमैन शिवानंद बेल्लारे काफी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसमें रोटरी मेंस बिजनेसमैन के इंटरनेशनल डायरेक्टर मार्क बुशील, सचिन गुरुराज, राजमोहन एम्ड्रे, वी अरविंद बत्रा सहित कई पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। रोटरी मेंस बिजनेस फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव 7 से 9 जून तक बैंगलोर में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ये भी गौरतलब है कि न्यूज 21 इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। आप न्यूज 21 के चैनल पर रोटरी मेंस बिजनेस फेलोशिप के इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बैंगलोर से शगुफ्ता खान की रिपोर्ट। आज हम लोग आरएमबी कॉन्क्लेव बेंगलुरु में हैं। हमारे साथ जो अभी हमारे साथ डॉक्टर हैं पद्माक्षी लोकेश। इनका एक बहुत ही अच्छा सेशन था जिसके बारे में इनसे बात करेंगे। अभी मैम, अभी जो आपने सेशन दिया था इसका एक टैगलाइन था इमोशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम जानना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और इमोशन आपने कैसे जोड़ा इसमें, ये इंटरेस्टिंग बात थी। नमस्ते सारी जो हमारी बातें सुन रहे हैं, थैंक यू। पहले थैंक यू भी एक इमोशन है, हम भूल गए उसको बोलने के लिए। हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप इमोशन से ही शुरू करता है। कौन सा इमोशन? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो बनना पड़ेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस में कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ये प्रोसेस में क्या हो जाता है, इंसान बहुत सूख जाता है, काम कर करके थक जाता है और उसका पूरा इमोशंस का जो भी है नेगेटिव हो जाता है, बहुत टेंशन में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा हर कोई बात करेगा पैसे बनाने के लिए, बट जो पैसे बनने के बाद क्या होगा कोई बात नहीं करता है। पर इसलिए मैंने इसके बारे में बात करने के लिए चूज किया। आपने अभी बात करा कि जो 65% बिजनेसमैन रात को सो नहीं पाते हैं। 65% नहीं सर, 72% जो लोग हैं वो एक्चुअली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में है। अच्छी नींद नहीं ले पाते, आपने ये बोला। आराम से सो नहीं पाते हैं, सो रात भर शायद सोचते रहते हैं कि सुबह में क्या करूं, और सुबह में क्या हो जाता है, आराम से काम नहीं कर पाते, सुबह में सो जाते हैं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। इसलिए मैंने ये चूज किया है क्योंकि मैंने खुद बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। रात भर नींद नहीं आता है मुझे, अरे कल क्या होगा, इसने ये किया है, मेरे कॉम्पिटिटर्स ने वो किया है बोल के बात रात भर सोचते रहते हैं। जब हम रात भर सोचते रहते हैं, दिन को हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। इसलिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ आराम से सो जाओ। मेरा अगला क्वेश्चन, जो 28% सोते हैं, जो आपने चूज किया 72%, वो कैसे सोते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है और वो कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करके चलते हैं? वो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हम तो ऐसे सोते हैं, लॉग जैसे सोते हैं। हमें जैसे कि सारे दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचते भी नहीं है। जो भी होगा कल सुबह उठ के देखा जाएगा, यही बेस्ट एटीट्यूड है सोने का। ऐसा नहीं हम प्रॉब्लम्स के साथ सोए, टेंशन के साथ सोए, ऐसा नहीं है। आप तो बीवी बच्चों के साथ सो ना, क्यों नेगेटिव के साथ सोते हो? मैं वही पूछना चाहती हूँ सबसे, अगर सोना ही चाहते हो तो खुशी से सो, नेगेटिविटी से क्यों सोना चाहते हो? नेगेटिविटी हम, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है, हम सभी बिजनेसमैन हैं, नेगेटिविटी ना चाहते भी आ जाती है हमारे पास, राइट? सर कंपटीशन है, हमें एक चीज समझना चाहिए, हम यहाँ दूसरों के साथ लड़ने के लिए नहीं है। हम जो भी है लड़ेंगे खुद अपने आप से। सो कंपटीशन हेल्थी होना चाहिए। हमारे बहुत कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है, फिर भी जितना कमाओगे ना उसका एक नाम होना चाहिए, वो ब्रांड होना चाहिए। चिंता मत करो, आपका बिजनेस होगा ही होगा पक्का। उसके लिए जब सुबह उठे रहते हो तब सोचना नहीं। क्या होता है, कुछ लोग मोबाइल में खो जाते हैं। जब सुबह में
नींद में नहीं है तो सोचते रहते हैं कल का क्या होगा, इसका क्या होगा। 90% सिर्फ सोच में रह जाते हैं। सोचना छोड़ो, काम करो। हम इंडिया में वर्ल्ड वाइड योगा डे मनाते हैं जून में, है ना। मैं अभी मैक्सिको था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कुछ योगा के सेशन इंडियन टीचर, लेकिन वहां भी देखा लोग अवेयर है। तो क्या योगा हेल्प करता है हमें एक बिजनेसमैन को एक फिट रहने के लिए, मेंटली फिट रहने के लिए और फिजिकली एक्टिव रहने के लिए? बहुत लोगों को हेल्थ बोले तो वो सोचेंगे कि अगर मेरे पेट में दर्द नहीं है तो वो हेल्थ है। पेट में दर्द ना हो, आंखों में दर्द ना हो, दिल में दिमाग में दर्द ना हो, दर्द वाले लोग हमारे साथ ना हो, यही हेल्थ होता है। सो इसके लिए योगा नहीं, कुछ भी करो, फिजिकली फिट रहो, योगा करो, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉकिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, पर भागते रहो। जिंदगी में भागो और रियल लाइफ में भी भागो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये आपने बात कंट्राडिक्ट कर दी। अभी आपने बोला शांति से दिया, अभी आपने बोला भागते रहिए। हम कहाँ भागे, कहाँ शांति से दिए, ये प्लीज क्लियर करें आप दर्शकों को। रात में आराम से सो, दिन में भागते रहो। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और ये वाकई एक अच्छी बात थी, क्योंकि हम जब एंटरप्रेन्योर होते हैं तो हमें बिजनेस में शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो ये पूरा आप आरएमबी कॉन्क्लेव बेंगलुरु न्यूज़ 21 पे लाइव देख रहे हैं। आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। हम सब लोगों के साथ आपसे बात करेंगे कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। और एक लास्ट अगर कुछ आप टैग लाइन या कुछ एक लाइन बताना चाहे एंटरप्रेन्योर को कि हम कैसे अपने आप को सही रखें। जिंदगी एक है, जियो शान से। उसमें बिजनेस करो या काम करो, जो भी है शान से जियो। हेलो, दिस इज रोटेरियन डॉक्टर पद्माक्षी लोकेश, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम बैंगलोर। Yeah, I'm really happy to be in India. I'm here because my friend Arvind Batra went to Mexico 1 month ago. He went to the district conference of my district, which is 4915 in Mexico, and that made me to be interested to come to India because I'm doing some contact with Indian companies, but I wasn't really sure if that was a real company or a fake company. And when he showed me this RMV program, I thought this is the thing I have to do. And I make the effort to come to India to meet all Rotarian, all people, and I know whoever I do business with here, it will be reliable and trustable. मेरा नाम Álvaro Vallejo, Maine, Mexico City. Hello everybody, myself RMBN Karan Garg from RMB Udaipur chapter. Today we are at RMB Bangalore, और RMB Bangalore ने होस्ट किया है BizNext. This is an amazing business event. यहाँ पे कई दूसरी कंट्रीज से भी RMBNs आए हैं जो RMB को समझने के लिए आए हैं, RMB के अंदर बिजनेस नेटवर्किंग करने के लिए आए हैं। और आज यहाँ पे 200 से ज़्यादा डेलीगेट्स पूरे इंडिया से हम इकट्ठे हुए हैं, एंड वी आर getting a lot of knowledge, we are getting a good network with us। और हम सबको लगता है कि ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है कुछ साल पहले RMBF के नाम से, रोटरी मिल्स बिजनेस फेलोशिप के नाम से, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जितना हमने 2 साल पहले जब हम इस सिस्टम के साथ जुड़े थे तब हमने सोचा भी नहीं था कि इतना फास्ट ग्रो करेगा। और ऑलमोस्ट एवरी मंथ नए नए चैप्टर्स ओपन हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। सो टुडे वी हैड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम US। So that was very encouraging. So we are all very excited, and this is a great event. I thank all the members of the organizing committee of RMB Bangalore. It's a fantastic event. Thank you. My name is Karan Garg. I am from RMB Udaipur chapter. मेरा नाम सोनल दोशी है और मैं मुंबई से मुंबई न्यूमरो उनो चैप्टर से हूँ। आप कब से RMB में हैं? RMB में मुझे अराउंड 2 years कंप्लीट होने में है। आपको क्या चीज़ लगी कि मुझे RMB से RMB ज्वाइन करना चाहिए, और उसमें क्या आपको ऐसा फैसिनेटेड लगा कि इससे मुझे कुछ बेनिफिट होगा? पहले तो RMB मतलब जैसे रोटेरियंस ही RMB मेंबर बनते हैं, तो जैसे हमारे हर सेशन में हम बोलते हैं कि ट्रस्ट पहले से ही बिल्ड हुआ रहता है तो बिजनेस करना इजी हो जाता है। सेकेंडली, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जैसा लगता है कि वेरन यू कैन शेयर आपके थॉट्स, व्यूज, या इवन इन प्रॉब्लम्स इन लाइफ अगर आपका है कोई और आप एक RMBN से शेयर करते हो तो डेफिनेटली सम सोल्यूशंस उस पर निकल के पीपल ट्राई टू हेल्प ग्रो योर बिजनेस। ये जो RMB कॉन्क्लेव आज बेंगलुरु में हो रहा है, इसके लिए आपने क्या सोचा कि मुझे क्यों जाना चाहिए? कैसे?
डेफिनेटली जैसे मैं मुंबई न्यूमरो उनो से ही इतनी खुश हूँ, तो लगा कि पैन इंडिया ग्रो करना है, वर्ल्ड क्या बोलते हैं, इवन इंटरनेशनल अगर ग्रो करना है तो इससे अच्छा क्या बोलते प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता है, जहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल सारे आरएमबी चैप्टर्स के जब लोग आ रहे हैं तो एक अच्छा नेटवर्क बनेगा एंड बिजनेस ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दिख रहा था मुझे। एंड इवन द सेशंस जो भी प्लान्ड किया है वो भी बहुत क्या बोलते सोच समझ के टॉपिक्स और वगैरह बहुत अच्छे लिए हैं। अभी तक आज ये पहला दिन है, बट वी रियली एंजॉयड टिल नाउ कि कुछ क्रक्स हम वापस लेकर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, सो लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। और आगे के 2 दिन भी मुझे लग रहा है कि बहुत लर्निंग वाला रहने वाला है हमारे लिए। So I am Major Priyanka and I am from Rotary Club of Mumbai Ghatkopar and RMB numero uno coming from Mumbai and I am into solar power solutions. आप आरएमबी न्यूमरो के कब से मेंबर है? 2019 से। अभी तक आपको कुछ बेनिफिट मिला है आरएमबी के से? RMB से पहले तो फ्रेंड्स मिले हैं, बिजनेस एसोसिएट्स मिले हैं and I have done more than 50 lakhs business only from RMB. For only one chapter? Yes, only my chapter. So अगर हम ये बात करें कि चैप्टर्स, इतने चैप्टर से आप कनेक्ट होंगे यहाँ से, बिजनेस मल्टीप्लाई होगा? Yes, definitely, and that is why I am here. 30 cities people have come in 6 countries. Yes. So definitely it's a great energy environment here and I would like to connect. मैं सबसे connect होना चाहूँगी, especially कुछ countries जो आई हैं, नेपाल, कैमरून वगैरह, so वहाँ की जो opportunities हैं वो देखना चाहूँगी definitely. आरएमबी तरह के कॉन्क्लेव हर साल करे तो आप क्या डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना चाहेंगे? Yes. हालांकि मैं बहुत सारे अलग फोरम्स में, नेटवर्किंग फोरम्स पे हूँ, बट द काइंड ऑफ कंफर्ट एंड द ट्रस्ट फैक्टर व्हिच वी हैव एज रोटेरियंस एंड विद आरएमबी इज टोटली डिफरेंट. Yeah, hi. This is Rotarian Rahul Vadwa from District 3110 from Rotary Club Agra Taj Mahal. I'm in Bangalore, you know, beautiful city, and in the Rotary Means Business Conclave. This is my first conclave to attend, and it has been just starting with this evening, where I am so thrilled to learn about so much opportunities. You know, me and my other colleagues who are here can really have out of this 3 days of conclave. So this is like an amazing, you know, initiative by the Rotary Club and the, you know, RMB members of the Bangalore, and I really look forward to next 2 days enhancing, you know, my business, you know, and with my friends, with more fellowship and networking. So let's do it and make this a great one. I'm very happy to be again in BizNext in Bangalore, because I was at Jaipur, as mentioned by Sachin ji, and I'm very happy. Last time I was the only one representative from Mumbai, but this time we are 16-18 people, and looking forward to more out of this business. And I think this time so many people coming from the other countries also, so we have chance to understand at least that country and what the business is, how they do business. At least whether they do business or not, that's a separate thing, but I think we come to know about their country and their businesses. And also this time so many people coming from different chapter, so we also know our geographical countries also, what required and what not. I'm looking for more next 2 days to see. Let's see what happens in next 2 days. And fantastic speaker also, and thanks to obviously Bangalore team and Shivanand Pelare and his team. Thank you to them. Yeah. Hemang Jangla from Numero Uno, founder president. Hello everybody, and the viewers of News 21. I'm extremely happy to be part of Rotary Means Business, the international conclave BizNext. I thank the organizers for inviting me here to be the keynote speakers for day 1. It's very heartening to see the participation. We have almost 250 to 300 participants across the country, and also global participation and attendees. It only means that, you know, this opportunity is available to all of us to exchange, understand more about businesses, understand more about people in India and outside of India. And it's a great initiative by Rotary. I always believe that business within Rotary comes with its own advantages. Trust, goodwill is something that is always already there. And then the opportunity to serve with and to give back to a fellow Rotarian is always wonderful.
This opportunity will only mean that businesses grow, Rotarians succeed, and they serve Rotary better. I always say that while we're calling it Rotary means business, it's always Rotary needs business, and our new mantra should be succeed to serve. And I'm extremely delighted to be part of Rotary means business International Conclave BizNext. Thank you, viewers. I'm Vijay Tadimalla, managing partner of TSMT. I'm a chartered accountant by profession and have been in the profession for over 25 years. Thank you. Hello there. This is Uday Kumar Bhaskara, the Rotary District Governor for District 3191, speaking on the platform of RMB, Rotary Means Business. Friends, all of us are in Rotary because one of the reasons is we have a profession called vocation. Either you're employed or you may be an employer. This platform of RMB, Rotary Means Business, is to nurture the business fraternity in such a way that they get a platform, not only in the city, across the country, maybe across the world. A wonderful attempt has been made by RMB Bangalore for this conclave, which has been well attended by more than 200 plus people. Not only across the country, many people across the borders have come. This is a good sign to start with. Maybe over the years, this will flourish into much bigger way. Congratulating all the people involved, and also encouraging all the participants to get the best out of their business and get well connected so that a meaningful, ethical, good business happens between Rotarians and maybe non-Rotarians. Thank you. My name is Mark Burchell. I am with NorCal RMB, chapter number 1 in Northern California. We're about an hour north of San Francisco, California, USA. So, what do you think about this RMB conclave, international conclave? About this, what Yes. do you want to say about this international RMB conclave? I am so impressed with the organization and the detail on this particular event. I went to the first one in Jaipur, and it was really well done. But this has so much specifics and details. The cluster breakouts and many of the featured speakers really have some great ideas. So we're not just networking. We're learning how to network. We're learning how to improve our business. So it's really a broad spectrum. It's really much more than just a networking event. So, do you happy with the growth of RMB these days? I believe so, yes. Yeah, we are now over 200 chapters, and so much of that growth has been in the past year. I think we've added roughly 70 chapters in just the last year, majority of them, of course, in India. So when I started this thing many years ago, I had no perception that it would have thousands of members and hundreds of chapters. Invite more people in and set up more chapters because there is so much value to RMB, RMBF. It's going to help us recruit more Rotarians, retain Rotarians. And so the growth of RMB is not so much for us, but for the people that we can help become better business people and the clubs that we can help be more successful because their members are more successful. Yes, I am Rotarian Shivanand Bellare. मैं बैंगलोर चैप्टर से हूँ RMBF का और रोटरी क्लब ऑफ प्लैटिनम सिटी. एक्चुअली इंस्पिरेशन तो हमको अपने बड़े भाई अरविंद बत्रा से मिला था, जहां हमने उनका बिजनेस कॉन्क्लेव अटेंड किया था जयपुर लास्ट ईयर. वहाँ से हम इंस्पायर हुए कि हमको सब मालूम है बिजनेस करते हैं, लेकिन हम क्या नेक्स्ट कर सकते हैं वही सोच था. सो हमने ये कॉन्सेप्ट बिजनेक्स्ट का हमने शुरू किया, विच इज़ अ कॉन्क्लेव फॉर बेसिकली टेकिंग अप आवर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. The idea was that we are going to have chapter members from all over India and from international countries. We are very lucky. We have 31 chapters which are represented, with 5 international countries also being here. The beauty is that we are having wonderful speaker sessions. We are having panel discussion sessions where we are giving some knowledge on very interesting modern topics to our audience. The same way, we are also having breakaway sessions, which the first cluster meeting is on the vocation that you are already existing, so that we can forge partnerships and collaboration there.
The second networking session is going to be on what you want to do with your business. Do you want to expand it? Do you want to export? Do you want to make it onto an e-commerce platform? These kind of breakaway sessions have been created so that you can meet like-minded people. There is speed networking, where after your introduction you are going to meet everyone and exchange what you can offer and what you can give. And that way we thought that we want our business community to really improve. The Rotary business has to improve, because always, because of the four-way trust, already हमारे पास ट्रस्ट तो है, अब वो कनेक्शंस आ जाए, और जब रोटेरियन का बिजनेस बढ़ता है तो फिर सोसाइटी के लिए देने के लिए उसको और आसानी हो जाती है. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ बिजनेक्स्ट. तो अभी जो भी आपको कुछ फीडबैक मिल रहे हैं मेंबर्स के, पार्टिसिपेंट्स के, यस, तो उससे क्या आप संतुष्ट हैं या कुछ आप चाहते हैं कि इससे भी कुछ हम? संतुष्टि तो है बट सेटिस्फैक्शन नहीं है, बिकॉज इन द सेंस वी नो वी आर डूइंग अ गुड जॉब, but we can always do a better job, and that is why we need the feedback, not only for ourselves, so that we can pass on the information to our next team who is going to take over. The Pune chapter is going to hold the next one. तो जो भी हमारे learnings है, अगर हम उनके साथ शेयर कर पाए कि उनका लाइफ थोड़ा आसान हो जाए और वो हमसे भी बेहतर एक प्रोडक्ट सप्लाई कर पाए और एक इवेंट दे पाए, दैट इज व्हाट आवर इंटेंशन ये एक अपने रोस्टर दिखा दीजिए थोड़े दर्शकों को, इसका पर्पस बता दीजिए. यस, सो हमने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ रोस्टर फॉर एवरी सिंगल मेंबर हु इज पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर मीटिंग 200 न्यू फेसेस, याद तो नहीं रह जाता. तो वी हैव सेड दैट लेट अस make a roster where everyone's photograph, his logo, his business performance, whatever his product is, he's able to provide. And that way you can still have some memory after the event, and it is like a database for you for future connections. तो इसमें आप अपनी टीम को कितना श्रेय देना चाहेंगे, जो आपकी टीम दिन रात लगी हुई थी इसमें, पूरी RMBF और पूरी आपकी टीम? हम तो भगवान नहीं है कि 10 हाथ हो और 3 सर हो, तो जितने सर है एक्स्ट्रा, जितने हाथ एक्स्ट्रा हो, उसी से ही काम होती है. सो वी हैव हैड 20-25 डेडिकेटेड मेंबर्स who have supported it in big and small ways, depending on their convenience, on their time, and it is only because of teamwork that we are able to deliver a performance or a program of some स्टैंडर्ड, सम वैल्यू कि याद रख ले सब लोग एक बार घर जाने के बाद. क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल होता है सिलेक्शन ऑफ स्पीकर्स, यस, सिलेक्शन ऑफ ब्रेकअवे सेशंस, लेकिन आपके चेहरे पे संतुष्टि दिखा रही है कि आप काफी हद तक खुश हैं जो यहाँ पे चल रहा है. यस, यस. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे RMB मेंबर्स जो नहीं आ पाए किसी रीजन से, और अगले जो पुणे में हो रहा है उसके लिए आप बाकियों से क्या कहना? श्योर. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक एवरी सिंगल पर्सन हु इज हियर. At the same time, I miss every single person who is not here, because we would have loved कि instead of being close to 200, if we were close to 400, we would have been happier. But yes, the idea is that today business is not like what it was 10 years back. Now every year there are so many changes in business. If we are able to bring speakers, if we are able to bring panel discussion experts who can help you go to the next level, improve yourselves, because without improvement we are going to die. So the idea is that we have brought in speakers, and I'm sure the Pune chapter will do the same thing. They are going to bring relevant speakers. Speakers तो मिल जाएंगे, relevant speakers जो आज के टॉपिक या कल के टॉपिक के बारे में हमें बता पाए. So that is what my advice to my Pune friends are. Yeah, I'm architect Nivedita Singh, and मेरी कंपनी का नाम है ग्रैपनल, और मैं RCN RMB नागपुर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पे आई थी तो था एक थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक था, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्क्लेव व्हिच आई वाज अटेंडिंग ऑन बिहाफ फॉर रोटरी. तो ऐसा था कि अच्छा थोड़ा तो वो सोशल काइंड ऑफ नेटवर्क होगा यहाँ पे, बट I tell you, it is broken because it's not only social, it's a business which we are really doing it, and dead sure जो people नहीं आए हैं, they have missed a lot, and would look forward to attending such more conclaves in future where we know we can connect pan India, pan world. मैं रश्मिन शाह from Central Mumbai chapter
number 149. I'm Vice President and President elect. और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा जो तरीके से उन्होंने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को उन्होंने डिवाइड किया है और जिस तरह से नेटवर्किंग का मौका मिला है एज ए चैप्टर हेड मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ भी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग पक्का कोशिश करेंगे एंड गुड लक टीम एंड ऐसा आप कंटिन्यूस प्रोग्राम करते रहो ऐसी हमारी तरफ से आपको विशेष है. थैंक यू वेरी मच. I am a Rotarian Madhusudan Bidi, a practicing advocate in Bangalore city. Rotary Means Business is a very good platform to do business and profession with the trusted persons. For example, I am situated in Bangalore. I have got a very good connection from this Business conference from Pune, where the advocates and chartered accountants are collaborating with me and I am doing their work. I am also assigning few professional assignment to Bombay and Pune. Why? Because Rotary believes in four-way test. That is trust, build relationship, build meaningful relationship. That we have already achieved. It is a very good platform to do network, collaborate with the Rotarians and RMBians. Thank you. सो मेरा नाम अदिति केडिया है एंड मेरी कंपनी का नाम सियोम एडवाइजर्स लिमिटेड है. सो आई फील आरएमबी ने बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है जहाँ पे मोर देन 200+ पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सब यहाँ पे आके मिल रहे हैं एंड आई फील ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो यहाँ पे जनरेट हो रहा है एंड डेफिनेटली व्हेन दिस केम एज अ प्रपोजल टू अस वी कुड नॉट डिनाई बिकॉज इतना अट्रैक्टिव था ये. एंड तो ये आपका रोटरी मींस बिजनेस का आपने कोई पहला इवेंट ज्वाइन किया है? यस यस. तो आपको कैसे क्या लगता है इस इवेंट के बारे में और क्या फ्यूचर लगता है आपको रोटरी मींस बिजनेस का? So, as I said, 3 days people are meeting, networking, also creating some sort of a personal bond. So, definitely इसका काफ़ी रिजल्ट देखने को मिलेगा सारे रोटेरियंस को in the coming years and I feel immense business create हो सकता है. आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, लोग आपसे कनेक्ट कर पाए. Sure. So we are running a category 3 alternative investment fund. ये एक equity fund है and the ticket size as per SEBI is 1 crore. So we are eyeing out for family offices, high net worth individuals, big corporates and CXOs of big corporates. जो traditional instruments के अलावा और कोई instruments को eye out कर रहे हैं, we can provide them the right platform which is SEBI registered, जहाँ से वो अपने investments कर सकते हैं. My name is Vijay and I am from Rotary Bangalore. So this program is an excellent program, well organized, and it was really kudos for those organizers who attended this, who organized this conclave at a business meet. It was wonderful to meet all over the business entrepreneurs in India, not only in India, outside India as well. So I think this is a good platform. Being a Rotarian, I was told, okay, this would be a good platform to scale up anybody's business. And I was not part of any RMB or RMBF. So as an Rotarian, I wanted to explore to see whether we can meet any business entrepreneurs apart from Bangalore, anywhere in India or outside India. And we could see that a lot of people have done one-to-one conclave and then could generate leads and referrals. Like this, the frequency of having these sessions should be more rather than having yearly once. So if you can have a frequency every once in 6 months and move from one state to another state all over in India or even outside India and make everyone to participate, I think that would really add a lot of value. So, do you met people who will love to support you? Do you met any people? Yeah. I met international people, and they're really looking for people from India, the entrepreneurs in different areas, not only in IT, non-IT as well. So it's a good platform for the collaboration. For any business that anybody is looking to collaborate overseas, I think this RMBF or RMB, it will definitely help. You're from which city? I'm a Bangalore local. Your name? Vijay. I am Rotarian Dilip Kumbhoskar from Pune.
I specifically came here to expand my business horizon. Lot of other businessmen from throughout the country and out of India also here. So there is an ample scope for expanding my business to get the knowledge of others' business, because the sale is the not only business part. Along with that, I am getting so many vendors also here, and that is the important thing of the networking. Especially Rotary's vocational service is the most important thing, is a soul of the Rotary, and RMB is the face of vocational service. That's why we are interested and promoting. Secondly, it is also promoting Rotary's membership through this business channel, business network. Thank you. No, it is a part of the Rotary. That's why I had taken the Rotary. But if you say, other activity, because it is a vocational service Rotary, no? That's why this is the face of the Rotary. I think that RMB is the future of Rotary, we can say. My name is Ruby Ray and I am from RMB Kolkata, and that's the only chapter in Kolkata as of now. Sir ji, ऐसा है कि I have been a part of networking since we all are in business. I've done BNI, I have done, there are a lot of women entrepreneurships like COVI, Confederation of Women Entrepreneurs, Open Ceiling and all of them. However, I'm a second generation Rotarian, been an interactor, Rotaractor, and there is one bias towards Rotary, that is there. But having said that, what Rotary brings to the table in terms of RMB is the trust, the fellowship that is already there amongst people, and in business, trust is the secret sauce of success. So which is why Rotary makes it a different, and also here it is all about helping you. It's not like competing with you or just doing a transactional business. It's about collaborating. It's about a relationship of long term. So that's the difference. यहाँ पे आने के बाद आपको क्या फील हुआ कि ये जो एक्सपेक्टेशन था जी ठीक हो रहा है आपको, उसके हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट सेशंस हैं जी there are quite a few of things which were way beyond what I had expected. Especially there was this lady who came up yesterday and talked about mental health and how important it is. It's such a boring subject, but the way she got the entire hall of 250 people together into it is something I really look forward to. Other people were giving solid inputs, but I wish speakers did not turn into teachers at times. So that is one point. Maybe we can brief speakers to be speakers and not teachers. They have solid points, but I am not in the framework to take notes and attend classes. And the panelists, well, one fact that came as a jarring fact is the moderator, the chairperson of the panelists was standing and rest of the panels were seated. So that came as a jarring fact. Having done a lot of panels myself, moderating and participating, and being a Pechakcha and a Toastmaster, that kind of is not a format I'm familiar with. That's one. And secondly, the level of panelists, given this is Bangalore, a little something I was expecting. So that's the only thing. Thank you so much. Hello, good afternoon. My name is Vasu Prasad H, and I'm from RMB Bangalore. I run a company called Infogeo.in, where we are into surveys, mapping and farmlands. We do connect with architects, builders, contractors and developers. Doing that for over a period of 15 years, I have started my own farmlands where we design, develop and market, manage farmlands, where people who are staying in cramped places in cities can just buy a farmland which is sort of 30-40 kilometers away from the places where they stay in large places, and have a farmland, and they can really enjoy their life in a good way. And we are trying to convert that into an investment opportunity also, where they can put up small farmlands and people can go over there, stay, and that can generate income. It's going to come at a cost which is pretty less. Always I try to attend business conclaves like this and try to connect with people, and that's how my business especially is happening on the connect. And Rotary is another big place where you can definitely find people who are
who can be believed. And other than that, Rotary is the place which has given me a chance to improve my hobbies. Like I write in English. My book is available on Amazon, Love You Beyond Life. And I make movies, and my Kannada film, which is about mobile misuse, is also available in Numberflix and Amazon Prime and Airtel Extreme. I'm very happy always being with the crowd here, and I can connect and we can grow. And I'm happy with this event that's going on. I would like to continuously invite all other Rotarians, come and grow. Thank you. Myself, Retractor Rennie Anthony. And it's been a great opportunity for me to participate in the business conclave because professionally my career is chartered accountancy. I'm pursuing chartered accountancy, and here I met several Rotarians from my same field, also from other fields, and they've been great. It's been great conversing with them because different aspects in the same career, different career opportunities I've been able to speak with them. So for me, it's like a different level opportunity which I got from the Rotary event that's happening here, Business Conclave. Yeah. Okay. Your name? I'm Retractor Nishchita. So this is the first Rotary event that I'm attending. And coming from a Rotaract journey, this is definitely a huge opportunity for us as Rotaractors. We are not just meeting people from our own district, but different chapters from all over the globe. So professionally, I'm a biotechnology researcher. I am working as a research scientist in a pharmaceutical company. So yes, I met a lot of people who are into pharmaceutical research in this conference. So looking forward for more opportunities in the future. So आप दोनों बहुत यंग हो, राइट? तो क्या आपको लगता है कि आरएमबी जो अभी सेकंड इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है, राइट? सो यू अटेंडेड फर्स्ट टाइम. सो आपको क्या फ्यूचर लगता है कि आपके बिजनेस में भी हेल्प करेगा ये? मैं आपको वन बाय वन दोनों से सेम क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा. पहले आपसे. Like I said, even it's the time of our life where we're building our career. So I think it's very vital and essential that we attend conferences like this. And I'm grateful for Rotary for giving us the opportunity to host the event, because then we get to meet more people. And as we are building our career, and we are looking up to startups for financial consultancy as well. So meeting Rotarians who are well established in their businesses has been a great opportunity for us to think about the next steps in our career as well. So yeah, that's it. So मेरा क्वेश्चन आपसे वही है, क्या ये आपको हेल्प फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ करने में रोटरी मींस बिजनेस हेल्प करेगा? क्या आप सोचते हैं बारे में? That's right. We are in this process of thinking about the business that we are going to enter into. So I'm asking you the same question. Yeah, that's right. So all these conferences, all the personals we meet, it adds up to the value of thinking into what kind of startups, what kind of industries we should enter into. Currently, we have no plans for business as of what to do, but we do have ideas. It's just seedlings of ideas. So I think that's the benefit which I had from here. Like what all chances I have, what's out in the market right now. So that's the benefit I got from here. But currently, as of now, we don't have any businesses. We are just thinking of that. So for that, it helped me. So same, if you are thinking that RMB also said that. Yes. If you are thinking that we can do. Yes. So same. So same question with you. So you think that RMB can help to grow your business or find new business? Yes, more than growing a new business, because as she mentioned, like we are not into business, but being part of Rotary is like finding people from diverse backgrounds. So there are many Rotarians who are working in my sector or her sector who can get us connected to their working firms, so that we can find for better opportunities in the future. So that's what I'm looking forward to. Like I can connect with all the Rotarians who are not just in my field, but all the diverse fields across the world, and we can have a better connection and grow our network. So you are not professional MCs, right? We are not. You are not professional MCs, but the way you handle the stage, it was fearsome that you are facing the
established business persons, right? Senior Rotarians. There was some pressure or not with you before this? So we have been had the opportunity to host few of the Rotaract conferences and few of the Rotary Club GOV and Rotary, the small club events. So, but this is the first time we are doing a huge international conclave. We did have the fear within us, but we love being on stage, both of us, and we love handling the mic also. So it was more than fear; it was happiness for us because it's our passion. And we are not professional MCs, but we are looking up to become one someday. Yeah. So maybe we can, if we plan to start a business, then we would start a venture like being professional MCs in the future. Yes, I was, because I've seen all the things. So you can be professional MCs. So any special message to young generation for RMB to join RMB, or to any Rotractors? Even the Rotractors can also join RMB, right? They can make own groups. They can connect with the international persons you have seen here, right? So any special message to young generation like you from both of you? Of course. So it's not very easy to gather a bunch of people from different fields together. In Rotary, it's like everyone is a family, and we have the trust factor in each other. So if we want to connect people also, it's not like outside Rotary, we can't just go around and talk to people and connect. But in Rotary, we can do that. So I think it's best for the young generation out there, the Rotractors who are not yet Rotractors, who wants to be Rotractors, to join RMBF. And because it's a huge community, it's a huge good family out there, you'll get good connections, and it's not that easy to make connections with people unless you're in a community like this. That's the biggest takeaway I got from here. Message for you. So I urge there are many youngsters who want to be entrepreneurs in the future, and I don't see that there could be any bigger platform other than Rotary Means Business. Hi, my name is Subisha Madhu. I am from Calicut chapter RMB, and I'm here to scale up my business. I am into software company, that is my company name is Cavs Private Limited, and I am mainly into mobile applications. So I would like to scale up my company and collaborating with all the business people over here in Bangalore, and this is a very nice experience for me. So through collaborations, let's grow together. Thank you. Yeah, मैं रश्मिन शाह from Central Mumbai chapter number 149. I'm vice president and president elect. और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा जो तरीके से उन्होंने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को उन्होंने डिवाइड किया है, और जिस तरह से नेटवर्किंग का मौका मिला है एज ए चैप्टर हेड, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ भी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग पक्का कोशिश करेंगे। एंड गुड लक टीम, एंड ऐसा आप कंटिन्यूस प्रोग्राम करते रहो, ऐसी हमारी तरफ से आपको विशेष है। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon. I am Rotarian Madhusudan Bidi, a practicing advocate in Bangalore city. Rotary Means Business is a very good platform to do business and profession with the trusted persons. For example, I am situated in Bangalore. I have got a very good connection from this Business conference from Pune, where the advocates and chartered accountants are collaborating with me, and I am doing their work. I am also assigning few professional assignment to Bombay and Pune. Why? Because Rotary believes in four-way test, that is trust, build relationship, build meaningful relationship, that we have already achieved. It is a very good platform to do network, collaborate with the Rotarians and RMBians. Thank you.